तो आज हम चालू करने वाले हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर जो रिलेटेड है स्किन में जो आएंगे हेरिडिटरी एक जनरेशन दूसरे जनरेशन जो आने वाले डिसऑर्डर होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स आर द कॉज बाय डिफेक्टिव जीन विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Various mode of inheritance include autosomal dominant, autosomal recessive, and sex-linked. Depending upon the mode of inheritance, one may or may not be find evidence of the same disease in the other member of the family. As a rule, clinical features appear early in the life. However, it may be delayed if the patient can be compensate effectively. The इसे बताएंगे कि जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है जो वन जनरेशन में दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम कंडीशन किसी पेशेंट में दिखे ना, वो किसी में दिखे। इन जनरल डिसऑर्डर ट्रांसमिटेड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन। जनरली ऑटोसोमल जो डोमिनेंट जीन होते हैं उनके एसोसिएट होती है, उनसे रिलेटेड जीन से एसोसिएट होती है नॉर्मल visual and mental development, normal physical or mental development, and normal life expectancy. About half of the individual are new mutant. कुछ half of the individual होते हैं म्यूटेंट होते हैं, तो उनमें म्यूटेशन हो जाता है जीन। The disorder transmitted by autosomal recessive genes are associated with grossly retarded mental and physical development. ऑटोसोमल जो रिसेसिव जीन का है उससे एसोसिएट जो रहते हैं वो मेंटली रिटार्ड और फिजिकली पुअर डेवलपमेंट होता है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल येट टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ जीन, देयर इज़ नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। हाउएवर वेरियस मेजर्स कैन बी यूज्ड आइदर टू मिनिमाइज द मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज और to compensate the defect to large extent. Some common hereditary disorder are discussed here. तो ये बताना चाह रहा है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होते हैं उनको हम इजीली क्योर नहीं कर सकते, बस उनको कंपनसेट कर सकते हैं। और जो डोमिनेंट होते हैं उसमें कोई फिज़िकल और मेंटल डिसऑर्डर मतलब डेवलपमेंट कोई एसोसिएट नहीं होता, वो नॉर्मली हम हैंडल कर सकते हैं, पर इसके लिए सिर्फ हम कंपनसेट ही कर सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले पहला जेनेटिकल डिसऑर्डर जिसका नाम है इकाइओसिस। इट इज़ कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर ऑफ केराटिनाइजेशन एंड मैनिफेस्ट क्लिनिकली एज ड्राई एंड स्काली स्किन। इकाइओसिस लिटरली मीन्स रिसेम्बलेंस ऑफ स्किन ऑफ फिश, मतलब इसमें हार्डनिंग हो जाती है, जो अपनी स्किन होती है उसकी हार्डनिंग और ड्राइनेस ऑफ स्केल्स हो जाते हैं, जैसे एक मछली के ऊपर जो उसकी परतें होती है उसकी जगह। फॉलोइंग आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ इचाइकोसिस। इसकी भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। जैसे इचाइकोसिस वल्गेरिस, इट इज़ हेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन विथ हाई पेनिट्रेशन। ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से होता है और हाई पेनिट्रेशन होता है। लेशन आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट एट द बर्थ। इसके लेशन होते हैं वो बर्थ के टाइम नहीं प्रेजेंट होते। डेवलप बिटवीन द 1 और 4 ईयर। 1 से लेकर 4 की एज में, 4 साल की एज में ये लेसन डेवलप होता है। लेसन कंसिस्ट ऑफ डर्टी ब्राउन एंगुलेटेड स्केल्स। डर्टी ब्राउन की एंगुलेटेड स्केल्स होती है प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, स्पेरिंग फ्लेक्सर्स लाइक क्यूबाइटल ऑक्यूलेटर फोसा। बॉडी होती है, स्पेरिंग फ्लेक्सर्स होते हैं, क्यूबाइटल फोसा भी होता है, ऑक्यूलेटर फोसा भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वल्गेरिस ऐसे होता है, ये देखो। और अपन एक्सिला एंड ग्रोइन इवन इन द मोस्ट ऑफ सीवियर फॉर्म। द स्कल्स आर मोर प्रोमिनेंट ऑन द एक्सटेंशन सर्फेस। एक्सटेंशन सर्फेस पे मोर प्रोमिनेंट हो जाते हैं of the legs and arm. On the trunk, back is more severely affected. बैक साइड पर बहुत सारे सीवियर अफेक्ट होता है। दैन चेस्ट एंड एब्डोमेन, फिर उसके बाद चेस्ट तक हो सकता है, फिर एब्डोमेन में हो सकता है। फेस एंड स्कार्फ आर इनिशियली अफेक्टेड इन द चिल्ड्रन। फेस होता है, स्कार्फ होता है, वो इनिशियली अफेक्ट होते हैं चिल्ड्रन से, बट टेंड टू क्लियर लेटर, फिर बाद में वो क्लियर हो जाते हैं। इन एडिशन सम ऑफ द पेशेंट हो इंक्रीज मार्किंग ऑफ पाम्स। कुछ पेशेंट में मार्किंग होने लग जाती है पाम पे ऐसे। ठीक है,
and soles and presence of follicular hyperkeratotic papule on the shoulder, arms, buttock and thigh. The lesions are usually asymptomatic. मतलब बटक पे भी वो चीज़ें आ जाती है, पेप्यूल्स वाली चीज़ें बन जाने लग जाती हैं, थाई पे भी होने लगते हैं, but asymptomatic होता है. But some patient complain of irritation especially during winter. The lesions improve during the summer and get aggravated during winter. इसके जो लेसन होते हैं इम्प्रूव हो जाते हैं समर के टाइम, बट एग्रावेटेड हो जाता है, मतलब बढ़ जाती है कंप्लीट विंटर के टाइम. देयर इज़ सम स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट एट पुबर्टी के टाइम इसकी चीज़ें होती है वो इम्प्रूव होने लगती है. अदरवाइज द लेजन इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. ये लेजन होते हैं थ्रू आउट द लाइफ पेशेंट के साथ परसिस्ट करते हैं. ट्रीटमेंट होता है परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ड्राईनेस एंड स्कारिंग कैन बी प्रोड्यूस बाय द कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ इमोलेंट लाइक ऑयल क्रीम, यूरिया 10% क्रीम होती है, ग्लिसरीन ले लो, ग्लिसरीन एंड यूरिया एंड हाइग्रोस्कोपिक एजेंट्स हाइग्रोस्कोपिक एजेंट होते हैं. हेल्प टू रिटेनिंग मॉइस्चर इन द स्किन एंड दोज गिव अ बेटर थेरेप्यूटिक इफेक्ट. मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है, मतलब ड्राइनेस नहीं होती. एडिशनल ऑफ वाटर इन द proportionate ratio in glycerin reduces the stickiness of the glycerin. The drug which may be help to patient include arsenic iodide, calcareous fluoride, china, इरिडोनियम, ग्रेफाइटिस. ये चीज़ सारी ड्रग है जो लिखी हुई है जो इसमें अच्छा इफेक्ट दिखाएगी. एक्स लिंक इकायोसिस. इट इज़ a transmitted to a recessive gene located on the digital sword arm of the X chromosome. Though it is transmitted by a female but manifest in the male. ट्रांसमिट तो होती है फीमेल के द्वारा पर ये दिखाई देती है मेल में. एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर मतलब फीमेल होती है वो रिसेसिव होती है, कैरियर होती है. इट इज़ कॉमन टू फाइंड अ मैटरनल uncles having a similar disease. In the culture fibroblasts of such patients, there is a deficiency of enzyme called steroid sulfatase, which may be responsible for the disease. एंजाइम की स्टेरॉइड सल्फेटेज की कमी होती है, उसकी वजह से ये डिजीज होती है. Clinically, it is appear more or less like a ichthyosis vulgaris, accepted that it's some more widespread and involve the cubital and popliteal fossa also. Follicular hyperkeratosis, papules on shoulder, buttocks and thigh. Hyperkeratosis and increased marking of the palm and soles are absent. जो hyperkeratosis होती है वो इंक्रीज होती है पाम पे, सोल्स पे absent होती है. It does not improve the at puberty के टाइम में improve नहीं होती. Scars may be present one side of the face and even scarp. One side of the face or scarp. Coma-shaped corneal opacity may be developed in a majority of a patient between the 20 से 30 साल के बीच में. Ichthyosis, pigmentalia and mental retardation may also associate with this. ट्रीटमेंट हो सकता है इसका. मेजर्स अप्लाई फॉर द ट्रीटमेंट इकायोसिस वल्गेरिस शुड ऑल्सो बी यूज ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ एक्स लिंक. सेम ट्रीटमेंट जैसा हमने उसके लिए दिया था इकायोसिस में. हाउएवर पेशेंट हैव अ क्रिप्टोचिडिज्म एंड हाइपोजेनाइटेरिया एंड मेंटल रिटार्डेशन में भी गिव Aurum calcarea, metronome and thyroidinum. Platinum used patient having a corneal opacity and cataract. Lamellar ichthyosis, previously known as a non-bullous variety of ichthyosis from erythroderma. It is inherited through the autosomal recessive gene of various expression. Those consanguineous marriage between the close relation are more likely to manifest the disease in offspring, even though rest of the family member may not have a disease. मतलब क्लोजली मेंबर जो कज़न होती है उनमें साथी होती है ना, नॉन बुल्लस टाइप की वैरायटी होती है इकायोसिस, और जो क्लोज रिलेटेड कज़न में मैरिज होती है उसकी वजह से ये डिजीज़ हो सकती है. और प्रीवियस उनमें कोई हिस्ट्री नहीं हो उनकी जनरेशन में कि ऐसा कुछ हुआ हो. क्लिनिकल फीचर में भी प्रेजेंट एट बर्थ
or appear during the first few days of life, essential improve erythema and hyperkeratosis. कुछ दिनों में लाइफ उसकी इनिशियल डे में उसको इरिथमा दिखेगा, हाइपरकेराटोसिस दिखेगा. इरिथमा इज डिफ्यूज आर जनरलाइज स्कारिंग विच मोर सीवियर ऑन फ्लेक्सर सर्फेस. इरिथमा होगा वो डिफ्यूज होगा, जनरलाइज स्कारिंग भी मोर सीवियर होगी फ्लेक्सर सर्फेस पे. स्किन इज स्मूथ शाइनी एंड शो फाइन रिंकल्स. इसकी स्किन होगी वो स्मूथ होगी, शाइनी होगी और फाइन रिंकल्स होंगे. व्हेन पास बिटवीन द थम्स एंड इंडेक्स फिंगर, ये पास होंगे इंडेक्स फिंगर और थंब में. द फेस एंड स्कार्फ आर यूजुअली स्कैरी. जो उसका फेस होगा स्कार्फ होगा स्कैरी होगा. स्कार्फ में भी इवन क्रस्ट स्कार्फ होगा वो क्रस्ट भी हो सकता है, क्रस्ट बन सकता है. कॉर्नियल डिस्ट्रोफी, फोटोफोबिया, स्मॉल फीचर एंड मेंटल रिटार्डेशन हैव बीन seen associated with it. There is no relationship between the disease and seasons. However, it improves with the advancement of age. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके साथ ये धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है. ट्रीटमेंट दे सकते हैं. चाइल्ड शुड बी treated with an emollient. However, those having a photophobia may be also given nectrum card. Belladonna patients have corneal dystrophy may be benefited with oral calcarea fluid, platinum os, silicious जिंकम्स. इन सब के जरिए हम इसको ट्रीट कर सकते हैं. एपिडर्मोलाइटिक हाइपरकेराटोसिस ये हमारा दूसरा है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुल्लस वेराइटी. बुल्लस टाइप की वेराइटी है. इकाइओसिफॉर्म इरिथोडर्मा ट्रांसमिटेड बाय ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन के थ्रू ये फैलती है. द अफेक्टेड चिल्ड्रन डेवलप ग्रुप ऑफ बुल्ला एंड ओकेशनल इरिथमा. बुल्ला फॉर्मेशन होगा इसमें, ओकेशनल इरिथमा होगा, यानी डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगा विद इन अ फ्यू और द वीक आफ्टर बर्थ. जैसे उसका बर्थ हुआ और कुछ वीक के अंदर ही चीज़ें कंडीशन होगी. बुल्ले आर फॉर्म बाय द हाइपरकेराटोटिक लेशन. बुल्ले फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइपरकेराटोटिक लेशन बनेगा विच यूजुअली स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम third month onward. Irregular, even linear white lesions are seen, especially on flexor surface में दिखेंगे, especially on irregular on flexor like axilla, cubital, popliteal fossa, groin and sometimes even neck, dorsum and hands and feet. This lesion may be emit foul smell due to the secondary infection. In some of cases, palmoplantar keratoderma may be seen in some patients. Skin is generally dry. Treatment was when the lesions are infected, the patient should be treated with the oral medicine mentioned for the skin infection in later stage of the disease. Local emollient, usually oral, aluminum, sargas, calcare for thyroidinum indicated for keratosis lesion. Neurofibromatosis. It is inherited through the autosomal dominant gene. ये autosomal gene के वजह से होता है which occur frequently by mutation. Mutation की वजह से होता है. Clinical severe type of lesions occur which include soft sessile dome shape. Sessile होते हैं एक ही जगह, dome shape होते हैं. पेडेंकुलेटेड लेशंस होते हैं. का न्यूरोफाइब्रोमा दिख रहा है ये न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. दिस आर द प्रेजेंट इन 100 यूजुअली ऑन ट्रंक एंड लिम्स. लिम्स हो सकता है, ट्रंक हो सकता है. फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू सीवियर सेंटीमीटर इन डायमीटर. व्हेन फाइब्रोमा इज डिफ्यूज एलोंगेटेड एंड प्रेजेंट अराउंड द कोर्स ऑफ न्यू नर्व, स्पेशली द ट्राइजमनल नर्व. ट्राइजमनल नर्व होती है उसको कोर्स के साथ एसोसिएट होता है. और upper cervical is named of plexiform neurofibroma. Second most common feature of pigmentation which may be present in the majority of cases. Sharply defined light brown oval patches, 0.5 cm diameter, curved capholated spots. In about 20% cases, the pathognomic signs is presence of freckles like pigmented
macule in axillary walls and in the perineum. Neurofibromata may be associated with a neurological movement like an intracranial tumor, which may be produce epilepsy in pheochromocytoma of the adrenal gland, leading to the hypertension in the children and gastrointestinal disease, leading to the recurrent hemorrhage or obstruction and involvement of the lower urinary tract, leading to the urinary symptoms. Enlargement of or pain in the neurofibromata suggests the possibility of malignant changes. However, rapid enlargement usually follow hemorrhage in the neurofibroma. Calcarea as calcarea floor, calica, lepas, staphysia, thuja are indicated. Calcarea is given as a caphylate spot in intercurrent remedy. Tuberous sclerosis. It is also known as a polio, transmitted by autosomal dominant genes with greater variability of expression. Nearly half of the cases are due to the new mutation. Clinically, features include skin lesions, mental retardation, and epilepsy. Characteristic skin lesions include adenoma sebecum or angiofibroma with periangular fibroma or cornea tumor, Sjogren patches, and avoid linear leaf-shaped with white macules. Angiofibroma usually appear between the age of 3 to 10 years, usually become more expensive at puberty and remain unchanged in the later life. Is present as firm, discrete yellowish on telangic tactic papule 1 to 10 mm in diameter on the nasolabial furrow, cheeks, chin, occasionally in the ears. Periinguinal fibromata usually appear at the after puberty, smooth from fleshy lesions under the nail fold. They are usually multiple and 5 to 10 mm in length. Sjogren patch is irregular, thickened, slight rise of plug, usually present at the lumbosacral region. Leaf-shaped white macules. Leaf-shaped white macules vary from 1 to 3 cm in length and usually present on the trunk or limbs. This is an important physical marker and it may be present at the birth or in the early infancy, much before any cutaneous lesions of the disease develop. Mental retardation is seen 60 to 70% of cases, which usually progressive. Epilepsy ultimately develop the most of the mental retard patient. High involvement is a retinal phacomata seen in few patients. Kills become nodules. Brain, especially in the region of basal ganglion, is usually seen in X-ray of skull. Appearance of face may be improved by destroying adenoma sebaceous by electrocautery or lasers. Electrocautery or laser Xeroderma pigmentosa. It is inherited through the autosomal recessive genes fibroblast. For most of the such patients lack the normal capacity to repair the damaged DNA induced by the ultraviolet lights. The initial manifestations occur in infancy and include photophobia and mild erythema on face, which usually follow increased dryness and prickling on light-exposed area. They subsequently spread to exposed site as well. However, anytime they are most numerous on the exposed part, initially these freckles
fade, fade in winter, but some become parts. Initially, these freckles fade in winter but become permanent later on. As disease progresses, numerous telangiectasia, asthma, angioma appear in between the freckles. After a few years, small rounded or irregular white atrophic macule can be seen in between the ankles and ankles. At this stage, the skin starts showing sign of atrophy as well as hypertrophy. A severe area of superficial ulcer which may heal with difficulty, leave disfiguring scars. Later, the patient develop multiple malignant tumor which include basal cell epithelioma, squamous cells epithelioma, malignant melanoma, or even angiosarcoma and fibrosarcoma. It may usually lead to the facial termination. Prognosis of the disease is very variable. Some patients live almost normal life, while others die even in childhood due to early malignancy. Other ocular changes apart from the photophobia may include ectropion conjunctivitis, symblophone, pigmented nupule on the conjunctiva vascular, pterygium, corneal opacities, and even ocular neoplasm. Associated neurological defects include mental retardation, areflexia, and microcephaly. The child must be protected from the sunlight by all available means, include the use of sunscreen locally. Adequate excision of all malignancies must be undertaken as soon as possible. Freckles. It is a probe transmitted through an autosomal dominant gene. It is due to the presence of abnormal large and long rod-shaped melanosomes in the melanocytes found in the pigmented macule. Melanocytes are normal in number and size. The melanosoma form melanin very rapidly after exposure to sunlight. To compare melanomas of normal skin, those can be seen presence of abnormally large quantity of melanin in the epidermis. Clinically, it started early in the life as asymptomatic light brown macules of 2 to 3 mm size on the part of the body exposed to the light, especially on the face, V of neck, dorsal aspect of the hand, and extensors of the forearm. The macule increases in number, size, and color during the summer and smaller, lighter, and fewer winter. Continued exposure to sunlight lead to darkening of the old lesion and appearance of new one. Skin should be protected from the exposure to sunlight. Minimize occurrence and appearance of lesions by use of topical sunscreen. Some of the medicine are given in palmoplantar keratoderma. It is comprise a group of disorder characterized by the hyperkeratosis of palm and sole. It may be associated with a severe disease and syndrome including Ichthyosis dermatosis, or may not be associated with any other abnormalities when hyperkeratosis is diffuse and involve only entire surface of palm and soles. Called diffuse palmoplantar keratoderma tylosis. It is transmitted by autosomal dominant gene and may be associated with a painful tissue fissures and hyperhidrosis. The thickening of palm and soles persists throughout the life with accentuates trauma. When diffuse palmoplantar keratoderma extend to the dorsum of the hand and feet and is associated with a various degree of erythema. It is called maldi malada. It is transmitted by the autosomal
recessive gene and may be associated with poor physical development, colon china, and subungular keratosis. When the hyperkeratosis is localized to the multiple small punctate area, it is called punctate keratoderma. When keratoderma is just localized to certain area, it is called localized keratoderma. It is consists of removal of thick masses of keratoderma and keeping the area soft and supple. The drug used in this include aluminum, antium, ascorphophatis, lycopodium, epidermolysis bullet. This comprise the group of genetically inherited diseases characterized by the enhanced tendency to develop blister due to a minor trauma or even a spot disease, usually on the pressure point and occasionally on certain mucous membrane, depending upon the mode of inheritance, level of split, and screens of clinical presentations. Epidermolysis bullosa has been divided into following four groups. Epidermolysis bullosa simplex. It is inherited through the autosomal dominant gene bulle, usually first year. Like most, even children start craving or walking. These blisters are clear and tense and heal without scarring milia. They are usually situated on pressure points such as a toe, finger, ankle, knee, wrist, elbow. Generally, physical well nails, hair, and patient are normal. The condition usually persists throughout life. However, some of the cases been reported have improved over time. Epidermolysis bullosa dominant dystrophy, also been epidermolysis bullosa dystrophy. This is transmitted through the autosomal dominant gene bulle, usually start occurring in the infancy or childhood at the site of trauma as simplex variety. However, they are healed with scar and milia. Mucous membranes show mild involvement in few cases along with the thickening and dystrophic nails. Epidermolysis bullosa dystrophic dysplasia. Treatment in all these patients usually protection from the trauma, even those which are occurring during one daily routine activity usually go unnoticed. Patients should be advised to avoid activities which are liable to traumatize the skin. Shoes should be soft and padded.